explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 14th, and the name of the chapter is data handling, right? So हमने पहले भी data handling के बारे में पढ़ा है, right? Now we are going to read some more things about the data handling, that how we can arrange our data in a representative way, right? So let's see how these datas are actually connected to our real lives. So it is, look at the scorecard. Look at the scorecard of Sanvi. तो यहाँ पर सानवी का scorecard है. The answer, then answer the questions that follow. उसके बाद हमें इन questions को answer करना है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, right? So as we can see, यहाँ पर subject है. Sanvi's report card, it is score दिया गया है that 1 star represents 10 marks and half star represents 5 marks. So you can see, right? So English में we can see that she has 1, 2, 3, 4, 5 full stars and 1 half star. That means 5 tens are 50 and 50 plus 1 half, that means 5 marks. 50 plus 5, that is 55 marks. Correct? Then next, in Hindi, she has 1, 2, 3 and 4. That means 4 tens are 40. So she has 40 marks in Hindi. Then it's mathematics. Mathematics mein she has 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 stars, that means 7 tens are 70. Right? Then in social studies, she has 1, 2, 3. 3 full stars, that means 3 tens are 30. Then 1 half star, that represents 5 marks. So that means 30 plus 5 is 35. So she got 35 marks in social studies. Then is drawing. Drawing mein she has 4 full stars, that means 40. And 1 half star, that means 40 plus 5 is 45. Correct? So now we are aware of each and every subject's marks over here, right? Now let's move ahead and try to answer the questions that we have been given over here. So it says, in which subject did Sanvi score the highest marks and how many? Right? कि कौन सा subject है जिसमें सानवी ने सबसे ज्यादा marks achieve किए हैं और कितने हैं? Right? So it is, we can say that she has achieved the most marks in mathematics, that is 70. So, maths, we'll write over here and we'll write 70. Clear? Then, in which subject she scored the least? किसके सबसे कम marks कौन से subject में आए हैं? So, we can see that least she has been scoring in social studies, right? Then, in which subject she scored the second highest? कौन सा subject है जिसमें उसे second highest, यानी कि mathematics से कम कौन से subject में है? It is English, right? So we'll write English over here. Then calculate her total marks out of 500. तो 500 में से उसको total कितने marks मिले हैं वो हमें calculate करना है. So we'll add all these numbers, that is 55 plus 40 plus 70 plus 35 plus 45. Correct? So let's add these numbers. So 40 plus 70 is 110. 110 plus 50 is 160. 160 plus 30 is 190. Then 10, 200, 245. So she scored 245 marks out of 500. Right? So she got 245 marks out of 500. Clear? Now, consider the grading system given
as below. According to this system, what grade will Sanvi get? तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है जहां पर ग्रेड्स दिए गए हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, और अब हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना है कि सानवी को कौन सा ग्रेड दिया जाएगा. तो 400 से 500 के बीच में द ग्रेड इज O. 301 to 500 के बीच में द ग्रेड इज A. 201 to 300 के बीच में द ग्रेड इज B. 101 to 200 के बीच में द ग्रेड इज C. Then 0 to 100 marks के बीच में the grade is D. So hence 201 से 300 के बीच में she got marks, that is 245. So her grade is B, right? So we'll write B grade over here. Clear? So इस तरीके से we got to know that Sanvi got B grade. Topic that we have over here is a vertical bar graph. So अब ये vertical bar graph क्या है? Let's see. Says the vertical bar graph below show the number of ice cream vendors sold from Monday to Friday. कि ये जो नीचे बार ग्राफ दिया गया है वर्टिकल वाला, ये हमें बताता है कि एक वेंडर ने कितनी आइसक्रीम्स हर दिन बेची फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट. लेट अस स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जल्दी से इस बार ग्राफ को पढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. So the bar graph is given over here. Ice cream sold from Monday to Friday. Then ice cream sold के number हमें यहाँ दिए गए हैं. Then days यहाँ दिए गए हैं, right? And the bar graphs are representing the numbers. So it says how many ice creams were sold on the following days. कि कौन से दिन पर कितनी आइसक्रीम सोल्ड की गई थी वो हमें बताना है. So it is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. कितनी गई? मंडे को वी कैन सी द बार ग्राफ इज बिटवीन 50 एंड 60, दैट मीन्स 55. ट्यूसडे को वी कैन सी द बार ग्राफ इज बिटवीन 60 एंड 70, 65. वेंसडे को वी कैन सी द बार ग्राफ इज गोइंग फॉर 40, सो इट इज 40. थर्सडे को वी कैन सी द बार ग्राफ इज बिटवीन 70 एंड 80, सो इट इज 75. फ्राइडे को इट्स द हाईएस्ट, दैट इज 90. Correct. Now next question, ice cream sold from Monday to Friday. तो total number of ice creams कितनी थी? So we are going to add all these numbers, that is 55 plus 65 plus 40 plus 75 plus 90. That gives the total, that is 325. Correct. So so the vendor sold 325 ice creams in total. Then on which day were the most ice cream sold? कि कौन सा दिन था जिस पर हमें सबसे ज्यादा आइसक्रीम्स दिखी जो कि सेल हुई थी? So it is obviously Friday क्योंकि it is the 90 आइसक्रीम्स, राइट. तो फ्राइडे, एंड दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग इट कि हमें लार्जेस्ट नंबर के लिए सबसे लंबा बार देखना है, right? Next, on which day were the least ice cream sold? किस कौन सा दिन था जिसपे सबसे कम आइसक्रीम्स बिकी? तो we can see that Wednesday is the one जिसका बार सबसे छोटा है, it is 40. So we'll write Wednesday over here, right? Then on which day the vendor sold 65 ice creams? कौन सा दिन था जिस पर वेंडर ने 65 आइसक्रीम्स सेल करी थी? The 65 ice creams were sold on Tuesday. So we'll write Tuesday. Then how many more ice creams were sold on Thursday than on Monday? कि थर्सडे को कितनी ज्यादा आइसक्रीम्स बिकी थी एज कंपेयर टू मंडे? तो थर्सडे का नंबर है 75 और हम उसमें से मंडे का नंबर माइनस कर देंगे विच इज 20. सो इट इज 20 मोर आइसक्रीम्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे. सो let's begin reading this horizontal bar graph. So let's look at the horizontal bar graph given below. It provides information about the favorite snack of a group of students. कि एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें बच्चों का फेवरेट्स जो स्नैक है उसके बारे में हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है. We can find out the number of students
who like a particular snack by looking at the lengths of the bars. तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लगाना है जिनको पर्टिकुलर स्नैक पसंद है, और ये हम कैसे पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बार्स, राइट? सो let us study the bar graph and answer the following questions. जल्दी से इस बार ग्राफ को पढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. Such as how many students are there in all. कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सभी नंबर्स को प्लस कर लेंगे, दैट इज 5, देन 9, देन 8, देन 11 एंड देन इट इज 7, राइट? सो सभी नंबर्स को प्लस करने के बाद वी विल गेट अ टोटल ऑफ 40 स्टूडेंट्स, राइट? देन विच स्नैक इज द फेवरेट अमंग द स्टूडेंट्स, की सबसे ज्यादा स्नैक बच्चों को कौन सा पसंद है? इट इज chips, that is liked by 11 students, right? How many students prefer samosa over vada? कि समोसा कितने बच्चों को कम पसंद है और वड़ा कितने बच्चों को ज्यादा पसंद है, राइट? तो दोनों के नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे, that is. Then how many more students prefer cookies to pizza? कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कुकीज ज्यादा पसंद है as compared to pizza? तो cookies का we can see it is 9 and pizza is liked by 8. So we can see that 9 minus 8 is 1. So hence one student likes cookie more than pizza, right? In the above example, the title of the bar graph is favorite snack and labels are vada, chips, cookies, pizza and samosa, right? Now we have a point to remember. Let's see what it says. So it says that the scale must start at 0. कि जो scale है वो हमेशा 0 पर ही शुरू होना चाहिए. The interval needs to be equal on the scale. कि जो interval है यानी कि जो gap है bars के बीच का या फिर numbers के बीच का वो बिल्कुल same होना चाहिए. All the bars should have equal width. कि जो bars की width होती है वो बिल्कुल equal होना चाहिए सभी की, right? Now we have the exercise. Let's see the questions. In the question number 1 is the bar graph here shows the number of students from class 1 to 5 in a school. Study the bar graph and answer the questions. कि एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें number of students है एक स्कूल के हर क्लास में, that is 1 to 5, right? So let's see what they are asking us in the questions and answer them with the help of this bar graph, right? So it says how many students are there in the following classes. The number of students बताने हैं सारी classes में. Class 1 में we can see there are 25 students, so let's write 25. Class 2 में there are 30 students. Class 3 में there are 15 students. Class 4 में there are 25 students. And class 5 में there are 35 students, right? Now, which class has the maximum number of students? कि कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा number of students है? तो we can see कि सबसे ज्यादा number of students हमें कौन सी क्लास में दिख रहे हैं? That is class 5. So we'll write 5 over here, right? Then next, which class has the least number of students? सबसे कम number of students कौन सी क्लास में है? It is class 3. So we'll write 3 over here. Then how many more students are there in class 2 than class 4? कि class 2 में कितने बच्चे ज्यादा है as compared to class 4? तो 30 minus 25, that gives 5 as the answer. So 5 students are more in class 2 than class 4. Then how many more students are there in class 1 than in class 3? The class 1 में we have 25 and class 3 में we have 15. So 25 minus 15 gives us 10. That means 10 students are more in class 1 than in class 3. Right? So the next question is also based on the same pattern. I hope you'll be easily able to answer the questions that are given in the question, right? Third question also belongs to the same pattern. You just have to read the graph and answer the given questions,
right? It is quite simple for you. Next topic that we have over here is the circle graphs. अब ये circle graphs क्या है? Let's find out. Circle graph is a circular chart in which the circle is divided into parts. कि सर्कुलर ग्राफ एक ऐसा सर्कल चार्ट है जिसमें जो सर्कल है वो डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में. Like pictograph and bar graph, circle graph are also used to show and compare information. पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ की तरह ही सर्कल ग्राफ भी यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए और उसे कंपेयर करने के लिए. Let us look at the given circle graph. तो यहाँ पर हमें एक सर्कल ग्राफ दिया गया है, इसकी तरफ देखते हैं. Says this circle graph shows the favorite books of students of class 4. कि ये सर्कल ग्राफ हमें दिखाता है कि बच्चों की फेवरेट बुक्स कौन सी हैं क्लास 4 के स्टूडेंट्स में, राइट? So it says the yellow part is the largest of part of circle. कि येलो पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा है इस सर्कल में. It shows that most of the students like to read fairy tales. और ये हमें बताता है कि क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको फेरी टेल्स की बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है. The blue part is the smallest, showing that the least number of students like to read jokes. कि ब्लू पार्ट जो है वो सबसे छोटा है, जो कि हमें सबसे लीस्ट नंबर दिखा रहा है स्टूडेंट्स का जिन्हें जोक्स पढ़ने पसंद है. Then the green part in the circle graph shows that science fiction books are the second most popular among the students. कि जो ग्रीन पार्ट है सर्कल का वो दिखाता है साइंस फिक्शन की जो बुक्स हैं वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं जो कि बच्चों को पढ़नी पसंद है, राइट? नाउ let us understand this with the help of the given example. So it says the circle chart shows the data of food items bought by the students from their school canteen. कि ये जो सर्कल चार्ट है ये हमें दिखा रहा है कि फूड आइटम्स कितनी ज्यादा स्टूडेंट्स ने खरीदी है अपने स्कूल की कैंटीन से, राइट? सो we have the different items, that is burger, samosa, ice cream, pizza and sandwich. Let's see the questions which says which food item is liked by most of the students. कौन सी फूड आइटम है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा खरीदी गई है? That is burger. So we have answered burger over here. Then which food item is liked by least students? कौन से students हैं जिन्होंने वो जो फूड आइटम है सबसे कम खरीदी है, राइट? सो इट इज समोसा, राइट? सो वी हैव आंसर्ड समोसा ओवर हियर. देन विच फूड आइटम्स वर इक्वली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स? कौन सी दो आइटम्स थी जो कि बच्चों ने इक्वली पसंद करी? सो इट वाज सैंडविच एंड आइसक्रीम. सो वी रोट सैंडविच एंड आइसक्रीम ओवर हियर. एज सिंपल, राइट? Then moving ahead to the exercise in which the very first question says the pet animals of students of class 4 is shown in the circle. कि बच्चों के कुछ पेट एनिमल्स हैं जो कि यहाँ सर्कल में सर्कल ग्राफ के थ्रू हमें बताए गए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. सो इट इज व्हाट पेट एनिमल डू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव? कौन सा पेट एनिमल है जो कि बच्चों के पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में है? सो इट इज डॉग्स, राइट? देन विच पेट एनिमल इज मोर कॉमन, फिश और कैट? कि कौन सा पेट एनिमल ज्यादा कॉमन है, कैट या फिर फिश? सो ऑब्वियसली कैट, राइट? सो वील राइट कैट्स ओवर हियर. देन Which pet animal do least number of students have? कि कौन से pet animals बच्चों के पास सबसे कम है? So it is birds. So we write birds over here. Correct? Then Kamal says half of the students have dog as a pet animal. Is he correct? कि कमल कह रहा है कि half of the students have dog as a pet animal. आधे से ज्यादा बच्चों के पास डॉग्स हैं पेट एनिमल की तरह. तो क्या ये सही है?
Yes, क्योंकि सर्कल अपने 2 halves में divided है and half is covered for dogs. So we'll write yes, he is absolutely correct. Right? The next question is also based on the same pattern. You have to read the bar graph and you have to answer the following questions. Then coming up to the chapter at glance, let's see what all we read in this chapter. Data is a collection that gives specific information. कि data एक ऐसा collection है जो हमें specific information provide करता है. Data is organized in the form of graphs for easier understanding. कि data organize किया जाता है graphs के form में ताकि हम उसे और भी आसानी के साथ समझ सके. Bar graphs are used vertical or horizontal bars of equal width to show the number of items in each category. कि जो बार ग्राफ्स हैं वो यूज किए जाते हैं वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए जो कि इक्वल विड्थ के होते हैं ताकि हम नंबर ऑफ आइटम्स दिखा सके हर कैटेगरी में. द टाइटल एक्सप्लेन्स व्हाट द बार डायग्राम शोज. ये जो टाइटल है वो हमें बताता है, बार ग्राफ का जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि जो बार डायग्राम है वो एक्चुअली क्या चीज दिखाना चाह रहा है. Labels explain what the bars represent. कि जो labels हैं वो हमें बताते हैं कि जो bars हैं वो क्या चीज represent कर रहे हैं. A circle graph is a circular chart in which the circle is divided into parts to show the data. कि सर्कल ग्राफ एक सर्कुलर चार्ट है जिसमें एक सर्कल के थ्रू हमें बताया होता है पार्ट्स में डिवाइड करके कि वो कैसा डेटा हमें शो कर रहे हैं. राइट? सो that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.